शुरू करते हैं फिर। हाँ, पिछली बार अ, ये मैंने कहा था कि जो कॉम्पिटिशन हो रहा है ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो उसमें हमने फैसला किया कि हिस्सा लेना चाहिए। और आज क्या था कि जहाँ तक भी जो हमारे काम स्पीकर जान वो आपको प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन इसमें फिर बाद में हमें ख्याल आया कि ये कॉम्पिटिशन की सरकारों के मुताबिक ये मुनासिब नहीं है। कॉम्पिटिशन is supposed to be identity supposed to be secret। और अगर हम पब्लिक से बता दें कि हम ये कर रहे हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि तो इट्स नॉट फेयर। तो उसके बजाय मैंने कहा कि फिर जो इश्यू पर हमने डिस्कस किए और जो बातें समझाई, तो इसको ज़्यादा जनरलाइज करके कि अर्बनिज्म को किस तरह से करना चाहिए। और ये सवाल है कि देखा मौजूदा क्राइसिस इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो सिटीज में। एक तो ये कि जैसे स्टैंड होगा उसमें ग्रीन एरिया कम होगा, बायोडाइवर्सिटी बायो कैपेसिटी आप कम कर देते हैं। और जितना अर्बन एरिया एक्सपेंड करेंगे उतना कार्बन बढ़ता है। तो दोनों तरह से ये इकोलॉजिकल डिजास्टर मौजूदगी में समझ है। लेकिन क्या कहते सब्जेक्ट, लेकिन अभी तक हम वही काम चल रहा है, कॉम्पिटिशन भी होता है। तो अगर हमने ग्रीन फील्ड में यानी कि अनडेवलप्ड नेचुरल ग्रीन एरियाज में नया अर्बन अर्बनाइजेशन नहीं करना, तो फिर जो एक नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कहाँ अकोमोडेट करें। और सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है और लेकिन ये तो करने करना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसमें कहाँ पॉपुलेशन। तो यही सवाल जैसे मैंने बताया कि लाहौर मास्टर प्लान 1950 उसमें बिल्कुल शुरू से में शहरियों से दावत दे के और उनको ये डिफाइन करने में पूरी जिम्मेदारी। आप बताएं आप कैसा प्रभाव चाहते हैं
अब जब एक विजन डिफाइन कर लिया एक ग्रुप ने तो कहा कि ठीक है अब आप जो राइटिंग बड़ी टेक्निकल राइटिंग रहती है आप इसकी राइटिंग लिखते हैं जिसकी बेसिस पे हम कम करते हैं आयत करेंगे अपॉइंट करेंगे और इसको डायरेक्शन क्लिक हो जाती है आपने ये करना तो फर्स्ट टाइम जब बच्चों में काम मेन इस तरह से प्लानिंग से आगे नहीं होता है कि सैंक्शन आदमी हम कह रहे हैं कि ये तो नहीं कर सकते इनको तो अगर बैंक फेलियर नहीं करना तो फिर ये जो आ रहा है 75 बढ़ता जा रहा है ये कहा जा रहा है कि इसमें सबसे पहला ऑब्वियस जब आप इन्हीं के साथ ग्रोथ को कम करें और ये कोई ऐसी फैंटास्टिक बात नहीं है लोगों ने किया भी सबसे बड़ी मिसाल चाइना में जो सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन दुनिया में था और उन्होंने बाकायदा एक ऑफिशियल पॉलिसी बना के और actually brought down the rate of growth. तो ये तो है जो है लेकिन नेगेटिव ऑल से सारा यूरोप नॉर्थ अमेरिका उनकी तो नेगेटिव ग्रोथ तो ये समझ कहना कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो नहीं होना है ये कोई लॉ ऑफ नेचर है जाहिर है किसी बात बाहर हमारे रीजन में हमारे मुल्क में पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इसके ही बहस में मद्देनजर रखना चाहिए पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है तो यानी जो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम करो तो ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया आप पिछले 20-30 साल में जो rate of growth was over 4% per annum, 4% per annum. वो अब less than 3% per annum आ गया। तो पहला तो एक जो एरिया है जिसमें ऐसे पॉलिसी पूरे मुल्क को स्टेट पॉलिसी नेशनल पॉलिसी और ये था अकेला बिल्कुल लगे होते थे अखबारों में भी बात होती थी 2 बच्चे काफी और उसमें बड़ी खाना चीजें देखने में आई बलोचिस्तान में करवा था नहीं करते आप बंदा ही नहीं नजर आता था गाड़ी को देखती बात और फिर एकदम से आप सड़क तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ तूफान को रोको बाहर ये एक पूरा फील्ड है जिसमें अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर्स वो पॉपुलेशन कितनी है और किस रेट से ग्रो करने की ये अलग बात है कि फिर उसको करना चाहिए और हो सकता भी है पॉपुलेशन हम किया गया हिमाचल किया इस जीवन में कैसे करते हैं बात और भी बड़ी ऑब्वियस बात है ये जो इवोल्यूशन थियरी डार्विन की बहुत ही
तो मानते हैं कि evolution होता है। जानने के मुताबिक ये मुसलसल एक बैटल फॉर सर्वाइवल बीच में से इस जंग में सर्वाइव बल्कि सक्सीड करने के लिए आप हर स्पीशीज किसी ने पहले सर्वाइवल मीन्स सक्सीडिंग टू स्टे अलाइव, उसमें ये तस्लीम करते हैं कि एक स्पीशीज अगर कामयाब हो गया तो वो दूसरी स्पीशीज की टेरिटरी में एक्सपैंड करती है उसकी, और जब टेरिटरी में एक्सपैंड करती है तो उनके रिसोर्सेज वसाइल वो इस्तेमाल करने लगती है जो सक्सेसफुल थी। तो जो बात डार्विन को उस वक्त जो साइंस थी नहीं पहुंचे, लेकिन आया तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि ये जो कुदरत में लाखों स्पीशीज जिंदा है एक दूसरे के साथ एक हार्मनी में और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस है, यानी एक स्पीशीज दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मिसाल के तौर पर पॉलिनेशन जो होता है, बहुत से प्लांट्स के पॉलिनेशन फूल के जरिए उसके, और उसके अंदर वो शायद मक्खी या दूसरे कीड़े वो आते अपनी ग़िज़ा के लिए, लेकिन वो फिर उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन में लाजमी किरदार करते। तो अगर वो कीड़ा खत्म हो जाए तो ये वाला पौधा भी खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये हर स्पीशीज, और ये जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे ये डेलिकेट वेब एक को आप चढ़ेंगे तो सारा हिल जाए, तो उसमें अगर आप भी सीरियसली सोचे, सिंपल सी बात है, अगर मुकाबला करें, मुकाबले आप समझे कि बस ये बैटल फॉर सुप्रीमेसी है, और बार बार आप देखें लिटरेचर देखें, इकोलॉजी में बायोलॉजी में जितना बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं ये व्यू क्यों करते हैं, ये एक्शन क्यों करते हैं, फिर उनको साबित करते हैं कि इसके पीछे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर हम आंख झपकते हैं तो उसमें तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बजाय हर बिहेवियर का वो जवाब ये क्यों होता है कि ये एक इंस्टिंक्ट हो सकता है। तो अगर वो सर्वाइवल टेरिटरी को बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं, वो दूसरे जानवरों को होती है, लेकिन वो टेरिटरी मार करते हैं, उसके अंदर तो जंग शुरू हो जाती है। तो वो सारा उनको नजर आता है, जो हरकतें इंसान है उनको उसके अंदर रीड करते हैं। देखेंगे टेरिटोरियल, तो ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो हमने अगर जाकर दूसरी टेरिटरीज कॉन्कर करनी है तो इवोल्यूशन का हिस्सा है। ये तो हमारी सक्सेसफुल स्पीशीज की सक्सेस है, टेरिटरी एक्सपैंड करना है। लेकिन जरा सा भी सोचते हैं कि अगर ये एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस और म्यूचुअल बेनिफिट के बजाय अगर कोई एक स्पीशीज ये समझे कि मैं जो इंसान समझता है कि हम तो अक्सर तो मखलूक़ात है ना, हम तो बादशाह होने के हकदार हैं, ये ऑन द टॉप ऑफ द फाइल
pinnacle of the tree वगैरह, तो वो अपना हक समझते हुए ये पूरे दूसरे स्पीशीज के को अपने ताबे लाना, और कामयाबी इसमें है कि वी हैव सक्सीडेड। ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई एक स्पीशीज अगर सक्सीड कर सकती है एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्पीशीज, तो दैट इज signaling, signing the death warrant of that one species. Because of this delicate net, अगर आप दूसरे सब को टेरिटरी एक्सपेंड कर देंगे तो बाकी स्पीशीज खत्म कर देंगे, तो फिर आप कैसे लिए? So this is another of the absurdities जो कि मॉडर्न इंसान ने ये एक नैरेटिव बना दिया। तो इसी तरह पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। अब दिस इज वेरी क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कि क्या होता है। If the human species succeeds at the expense of other species, तो उसकी सक्सेस ही होगी कि डेथ रेट कम हो जाएगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंप्रूव कर सकते। So not an unlimited planet. So you have to come to a point where you, जैसे किसी ने कहा कि in a limited cosmos you cannot have infinite growth. You have to come to a limit. वो सारे ग्रो करने के लिए you have to consume. There's only so much that you can consume. That comes to an end, then you want to come to an end. So ये absurdity पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ नहीं आती, but it's pretty obvious. One of the biggest, or if not the biggest, threat to human survival is human suffering. As a species, if we succeed and become the king, this then we die. But yeah, actually hurts. We are just consuming more. In simple words, we have crossed the tipping point of the number, the population. There is a limit to the population of any one species. और आपने देखा होगा वहाँ नेचर में बहुत से ऐसी स्पीशीज होती है कि वो कुछ सालों बाद सारे के सारे mass suicide commit करते हैं. This is probably the instinct of survival, that if we keep on growing so much, then we eat all the resources and we won't survive as a species. So some sacrifice themselves. That's an amazing thing. So population बात हो रही थी, ये it is the population growth, इसमें भी कोई normal growth होती है. There is a normal population and a normal rate of growth. In fact, an unending rate of growth is not normal. If the population grows beyond the normal and hits the ceiling of the maximum that the environment can produce, then you have to return to the normal. और उस रिटर्न में फिर मोमेंटम से you go beyond the normal, you may have reduced the population too much, so you hit the minimum bottom. So it's a constant vibration, but always above or below the norm. And we forget this norm, the normative population, normative. There is no only growth is not normal. After a period of growth, if it grows more, there has to be degrowth. And then beyond, it can't go on forever, it has to pick up.
तो ये एक बहुत ही अहम चीज है जिसको कि हम बिल्कुल अपने प्लानिंग में सोच से उसको दिखाते ही नहीं कि भाई एक नॉर्मेटिव प्लानिंग ये होती है. You don't always plan to grow, and then what happens? Then you grow some more. As a result of that growth, you become successful. You can grow faster, and then what? You project the next growth. This is absurd. इसके बरक्स के basis paradigm वो normative rather than a linear incremental paradigm which is not sustainable. What is sustainable is normative interaction with the environment. The last time, एक सवाल भी किया था, what's the normative city? Extending the same idea that the notion of a normative paradigm, a normative method, a normative approach to manage anything, any action, whatever you plan to do, have breakfast and go to sleep, or get an education, anything. Question is what is the norm? अगर आप कहें कि जी मैंने बस सक्सीड करना है तो आपने मैट्रिक कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, फिर एक और what is that? In everything there has to be a norm. How much can you eat? How much can you drink? What is the temperature that you can survive in? It's not unlimited. There has to be a norm. So, for everything, अगर आप सोचें, पहला सवाल ये कि नहीं शहर डिजाइन करना है, तो शहर होता है खाना खाना है, तो फिर नॉर्मल खाना क्या होता है? अगर उसमें ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मिकदार कम है, ज्यादा है, तो वो आपको फायदा नहीं करेगी. या आप कभी कभार ओवर ईट कर सकते हैं, बट यू कांट गो ऑन ईटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर. सो just like that, and especially in urban planning or doing anything, आपने क्लाइंट ने कहा घर डिजाइन करना है, आप पहले सवाल घर होता है. We don't think about it. You always think अब इससे भी बेहतर बनाना. This idea that we, the top species, can do better. We can do better than nature itself. We can improve. So, हर step पे कहते हैं जी next step better क्या होगा? Instead of saying कि हम normative से कितना deviate कर गए. So what do we have to do? We want to come back to the normal? या हम कितना नीचे चले गए तो we have to come back up to the normal. तो ये एक normative planning, normative concept, extremely important to keep in mind as the basis for any planning of any action. आपकी बात समझ आ रही है? I'm just thinking, Lahore context में what would be the normative city planning for Lahore? So the question is, what is a normative city? Any city. तो अपने resources को देखते हुए grow कर रहे हैं. जो अपने resources को देखते हुए grow कर रहे हैं. Consider करते हैं. मैं ग्रो करता है, फिर और करेंगे और रिसोर्सेज आ जाएंगे, फिर और ग्रो करेंगे. कहीं ना कहीं तो वो भी एग्जॉस्ट कर लेंगे. ये जब सक्सीड करेगा तो उसको और पावर मिल जाएगा, फिर और ग्रो करेगा. स्पेस की तो लिमिटेड है. How big should be a city? 10,000 people. Why? According to Plato, Republic के अंदर तो वो यही बताते हैं, ideal city population is 10,000 people. You're quite right. Actually, तमाम wisdom traditions इस चीज को बार-बार वाज़ेह तौर पर पेपर ने कहा कि जी 10,000 people, किसी ने कहा कि size, normal size of a city should be कि आप सारी population को एक जगह जमा कर दें and you should be able to recognize every face. You can calculate the number. So this is a central question which
all wisdom traditions have placed as the first question, what is a normative city? I would देखें एक तो ये कि प्लेटो ने कह दिया तो बस मैंने बड़ा सोचा इसके लिए बहुत जो आपने बात की वो रिकग्नाइजेबल है सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है अगर आप अपने साथ में लेके जाते हैं हमने इस पे सोच के इस नतीजे बहुत अच्छा this was presenting what should be the normatives पहली चीज ये it should be everything all the services all the amenities that you want from a city should be within walking distance. Walkable city. What is a walkable city? पेडेस्ट्रियन नहीं तो यहाँ हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे लोग उठते थे पैदल इधर हमारा जाते नाश्ता करके दूसरे दिन वापस आ जाते आपने सबसे ज्यादा ट्रैवल मोबिलिटी क्यों चाहिए is when you live and place you work, you have to do something. Productive occupation. So the travel distance either to but without using machines. ना मोटर गाड़ी में आप जाए ना लिफ्ट पे जाए इंसान की बात करें मोटर गाड़ी के तो लिमिट्स human body की limits so even the normative city is not somebody's fancy idea it's just related to who we are it's related to what the normative हम तो यही नहीं मानते कि there is something as a normative man तो कहेंगे ये आप जेंडर बायस करेंगे इससे आप normative human so there's it applies into everything so the normative system there are other conditions also. Let's say that a normative system is not dependent on mechanized industrial modes of doing it. Anything. even waste management Exactly. What is normative waste? waste Huh? waste How much? It's a function of what you consume. Huh? जो कंज्यूम करेंगे वही निकलेगा ना How much can you consume? Is there a norm? 3 meals a day But we say तो अभी तो का GDP और बढ़ाना है 3% तक लाना है फिर 7 तक लाएंगे फिर 10 तक जाएंगे कंजम्पशन हो रहा है Yes, absurd. but you also mentioned economy is also related to this That's it. Economy is what? Your interaction with the environment. What you take from the environment and what you get back. Is there a limit? Yes, there are two limits. There's a limit of how much you can consume and the limit on how much the planet can produce. इसके बीच में रहेंगे तो नॉर्मल है और बिल्कुल बैलेंस है तो दैट्स डिविएशन थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन अपर और लोअर अगर लेस देन व्हाट यू नीड टू सर्वाइव दैट्स द लोअर लिमिट but more than the planet can produce that's an upper limit and that should be what the economy should be about अगर उससे आप बढ़ रहे हैं then you have to bring it down you have to reduce consumption अगर वो consumption
Normative से गिरने लगे, you have to do something to raise it. It's a constant fluctuation like this, but there are limits. If you cross the limit, you're not going to come back. So, how much you can, if you live, if you consume normative diet, and if your consumption is normal, then your waste is also good. And if it is biodegradable, that is, there are no chemicals, toxins, no plastics, no industrial products, and everything that you, there is no waste. Zero waste, 100% recycling. That would be in a normative economy. Decide to develop. ये किसको नहीं पता है, ये कौन सी को नहीं बात बता रहा है, सबको पता है। कर क्यों नहीं रहे? ये कर इसलिए कि हमें तो प्रोग्रेस है, हम तो डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट भी तो याद ही नहीं, and that is why it is suicidal. So, there is a normative city of some area. The word normative city is not based on any person's rights and disparities. It's based on the simple biology of our species. So, you can have the will decide for this drinking water, production, or entertainment, or whatever. Honestly, first question is, what is the norm? एक शहर से ज्यादा. So this is a city which has gone out of control. We have to bring it back to the norm. That means we have to subdivide this megalopolis into normative 2-kilometer diameter neighborhoods, cities. ये गाँव है जहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो क्या होता है, वो टाउन कमेटी, टाउन हॉल. So that is when the hall was a normal town. मगर वो गवर्नमेंट से बढ़ता गया और पिछला नामी टाउन भी है, शादरा टाउन भी है. ये तो लाजमी होगा, you cannot have a city model town. So if you have a city which is more than the normative, you have to de-urbanize. That's the big trick. So if we can see things so clearly, urbanization, अगर एक शहर नॉर्म से बढ़ गया है, तो मजीद बढ़ाना नापत. हाँ, ये देखिए इसको किस तरह से हम de-urbanize करते. Now this is also one of the questions in the Lohar master planning study. उसके response में the committee citizens, not the professional consultants. The citizens said, we don't want a master plan for it. बहुत हो, जब देखो नया मास्टर प्लान, जब देखो नया, ये शहर तो सस्टेनेबल ही नहीं, कोई भी शहर सस्टेनेबल नहीं. What does it produce? It doesn't produce anything. It cannot survive without a host region. तो इस रीजन में एक और शहर में 49 urban settlements. So we want a structured plan for this region and 49 master plans. ये और plan इस तरह है.
क्यों? ताकि ये जो पॉपुलेशन इन माइग्रेशन हो रही है, इसलिए सारा इन्वेस्टमेंट आप एक लाहौर में कर दिया। तो जब सारा इन्वेस्टमेंट एक सेंटर पे होगा तो नौकरी, सक्सेस, इनकम, ड्यूटीज, सर्विसेज, हर चीज की रिकॉर्ड आना चाहिए, बेहतर एजुकेशन, बेहतर। So the answer was develop 49 urban centers in the division of Lahore, ताकि उनको भी उसी स्टैंडर्ड की facilities available in this share. So there is no reason for them to come here. They can enjoy life better. Question was what, why do you call a city a city? So this is city with all the facilities you're saying you want better education, better employment, better standard of living. Is that the question? Good question. That's again a basic question. What is this? How do you define this? Sunday was that your share of Our definition is कि कोई भी इंसानी बस्ती आबादी उसमें इकोनॉमी उसके बजाय ऐसे जिए। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, एक प्राइमरी प्रोडक्शन which means agriculture, mining, fishing, raw material. फिर उस मटेरियल, रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करते, दरख्त काट के तो फिर कुर्सी बना लीजिए, कपास का पौधा लेके कुछ धागा बना लिया। तो कपास प्रोड्यूस करना दैट्स प्राइमरी, दरख्त प्रोड्यूस करना इज प्राइमरी, but processing that to manufacture something, to produce commodities, that is the secondary sector, जिसको आप इंडस्ट्री कहते हैं। फिर इन दोनों के अलावा भी कुछ आपको सर्विसेज चाहिए। कोई मोची चाहिए जूता बनाते हैं, कुछ चट्टान चाहिए हल बनाते हैं, कोई नाई चाहिए बाल काट दे, तो हकीम चाहिए कि नक्श दे, कोई टीचर चाहिए जो बच्चों को पढ़ाते। ये सर्विस aspirations. So any economy has primary, secondary, and tertiary sector. My definition of what is a city is where the biggest or the largest number of the population is employed in the tertiary service. आप सोचे तो विलेज में maybe 80% would be farmers, 5% maybe crops and produce things, and maybe 5% will be service buildings. जबकि urban center, there may be less than 5%, or less than 5% in primary production, less than 10% in secondary production, 80% are in services. ये city है, वो village. Now between that extreme and this extreme, there's a whole range. That is your other towns. So you have a basic village, then maximum village, then you have other villages which may be providing services. Our village में चलो primary education तो हो गया, या आपने अलग बेस सिखा दी, आगे जो पढ़ने जाए तो स्कूल के
कम से कम इतने क्लासेस का होगा, इतने टीचर होंगे, उसमें कम से कम बच्चे नंबर तो होंगे ना. So you need the minimum population to support a primary school. You need a larger population to support a secondary school, then a college or a university. इसी तरह से health facilities, local doctor, clinic, health center, hospital, specialized. So for all services, you have these intermediate which are providing services to the catchment area. So जो लाहौर जैसा town है, this is serving not just district Lahore, but not really division Lahore, not only Punjab, there are many things it is serving, maybe even worldwide. तो वो बड़े से बड़े उसके जो है customers होगा. So you have, but we've established there's a normative city. And likewise, there is a one limit which is village, the other is उससे बढ़ जाए then you have to make an exception. यहाँ मैं कह रहा था कि सारे wisdom traditions उसको डिफाइन किया गया है various ways. तो हमारे यहाँ भी हदीस के शहर एक हद तक होना चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए तो जाओ दूसरा शहर आबाद. All wisdom traditions have defined this. हमारे साउथ एशियन शास्त्र देखें, उनमें भी डिफाइन किया है कि नॉर्मेटिव सिटी क्या होगी. So you work with a norm and then you plan कि इसको हमने बढ़ाना या घटाना, because you have the norm in mind. That's the guideline. उससे फिर आप मॉनिटर करते हैं कि ये बढ़ गया या घट गया, and that determines what you have to do. So every action, whether it is कि आप बिस्तर से उठ जाएं, अंगड़ाई ले लें, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, नाश्ता कर लें, it's all weighed against that norm. कि आप काफी सो रही है, इससे ज्यादा नहीं सोए या कम सोए तो थोड़ा और सो लें. Every action has to be compared to a norm. And we have only modern man has this absurd idea of infinite growth, development, progress forever. So you use the normative method to first establish the standard size of the city, height of the buildings, the services to be provided. It's a normative standard. Then the job of the planner is determined by that. ये शहर अभी और कर सकते हैं इसके अंदर पॉपुलेशन नॉर्मेटिव से कम है या लिमिट से कम है, तो ठीक है, हमें जो लोगों को इनकरेज करें. या हेल्थ सर्विसेज कम है तो डॉक्टर्स को इनवाइट करें. नॉर्मेटिव से कितना कम है या नॉर्मेटिव से ज्यादा है. अगर कोई जो भी चीज उसमें सरप्लस है उसको कम करें, ऑफलोड करें, जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करें. So the job of the urban planner must begin by defining the norm, and then you investigate, study, and determine कि इसमें norm से in relation to the norm deficiencies क्या है और surpluses क्या है. सर एक सवाल मेरा कि सर नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल की डेफिनेशन मेरी जो नॉर्मल जो मुझे लगता है वो जो चीज नॉर्मल लगे या वो स्पेस चले बात करें उसको 10 की स्पेस की बात नहीं कर रहे, चलो वो मेरे लिए नॉर्मल हो सकती है. मेरे भी दूसरा बंदा जिसके लिए वो नॉर्मल ना हो, ये चीजें 1% 2% मेरी भी तो करती ना बात.
लेकिन हम बात करें कि हम एक नॉर्मल वैल्यू बना लें, हम वो बना लेते हैं, बट आप ये अपनी पसंद की बात है। जी सर। पसंद बेशक है, मगर एक लिमिट से कम होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर अगर आपके पास सिर्फ 3 फुट बाय 6 फुट है, जी सर, उसमें तो मुद्दा ही सर्वाइव, क्योंकि आपने उठना भी है, कपड़े भी बदलना है, खाना भी खाना है, you need some space। इसमें तो पसंद और मेरी मुद्दे से ज्यादा नतीजा भी सुना दो। लाहौर में ये बहुत पावरफुल एक साथ थे, आसिफ भाई, ये ब्रदर ऑफ आसिफ जाफर, very wealthy, very powerful person। आसिफ जाफर ने फैसला किया मुझे लाहौर में नगर चाहिए। Who's the best architect? मुझे उस्ताद अहमद बड़े जबरदस्त है, सुहीद के हायर उस्ताद अहमद लाहौर असर और उनको कमीशन किया कि आपने रिव्यू कर। तो अहमद लाहौरी साहब ने साइन किया, सबके पास दिया। जब वो मुकम्मल हो गया, आसिफ जाफर साहब being what he was, politician, very busy, कभी उधर जंग में लड़ रहा है, कभी उधर कर रहे हैं, सारा हिंदुस्तान में इनके पर कर रहे हैं। वो जब आए तो पहली बार उन्होंने देखा कंप्लीट। ये है वो हवेली यहाँ जो गर्ल्स कॉलेज है। जी सर, तो टेक्निकल कॉलेज लड़कियों का वो और पिछले के पास नहीं, इधर अंदर अंदरून शहर कौन सी मंदिर के पास है? स्पाइस बता रहे हो क्या? स्पाइस नहीं, इधर से है ना, मस्ती गेट से। तो ये जो है खाना सर मुझे हवेली आती है, वो जब स्कूल बन गया होगा, स्कूल बन गया ना, बहुत बड़ा है। जी सर, वो पूरी हवेली सी बन गया। कहलाती है, कहलाती है। तो विक्टोरिया नहीं, विक्टोरिया हाल के मरियम ज़मानी मस्जिद के साथ आती है, मरियम ज़मानी मस्जिद के आसपास उसके बाद नजदीक है हमारी मस्जिद, थोड़ा आगे से है तो वो गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, ओके ओके, वो जो तो नहीं it's not a small haveli, for that area especially, it's a very cramped area. Asif Jaffar to comment on his inspection of the completed project। वो कहते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी से स्तन मारे। अब वो देखें उस वक्त की जो रिलेशनशिप्स जो हमें बताया जाता है कि बड़ा वर्ल्ड क्लास वगैरह, मीमार अहमद लाहौरी, मैं उनको जवाब देता हूँ, साहब आपको तो एक गज 2 गज खबर पता चलेगा तंग क्या होता है। This is all historic, so there is a limit। और जो पसंद नापसंद का कोई लिमिट नहीं। There is a physical limit, a biological limit, जो कि जरूरत पे ना, और जो ख्वाहिशात की बात है उसकी कोई हद नहीं, अनलिमिटेड। सो फिर हमारा काम एज अर्बन डिजाइनर, हैविंग डिसाइडेड कि नॉर्मेटिव सिटी क्या हो, नॉर्मेटिव उसकी साइज, पॉपुलेशन, स्टोरी हाइट, सर्विसेज, इकोनॉमी, ये सब कर
फिर आप देखते हैं डेटा स्टेटिस्टिक्स के इसमें ओवर पॉपुलेटेड है, अंडर पॉपुलेटेड है, कौन सी सर्विसेज कम है, कौन सी सरप्लस है, एंड यू मेक अ प्लान either to get rid of the surpluses or to make up the differences. That becomes the planner's program. So, how are you doing for time? Actually, time हो गया 6:30. सर So, जी, I think just time for questions. वैसे जिस तरह कई चीजें होती हैं वो मशहूर हो जाती हैं, वो एक अपना नाम बना देती हैं। जिस तरह अगर छोटे शहर भी होते हैं, एक लाहौर है, उसने अपना बना लिया। या अगर हम अदारों में की बात करते हैं तो लाहौर में किंग एडवर्ड का एक नाम है या लम्स का एक नाम है, एनसीए पुराना अदारा माना जाता है। तो हर शहर में इस तरह होता है कि बाहर हार्वर्ड का नाम है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका वहां पे एडमिशन हो जाए, वो वहां पे जॉब लग जाए वहाँ। तो सिर्फ इस तरह से तो हर बंदे की एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाने की एक रहती है, जस्तजू रहती है कि वो बेहतर से बेहतर है। तो फिर इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम एक बाउंड्री सेट कर भी लेंगे तो लोग तो यही चाहेंगे कि नहीं, तब भी मैं लाहौर में आ जाऊं या मैं एक बड़े शहर में कराची में चला जाऊं, वहां पे मुझे अच्छी जगह से पढ़ने का भी मौका मिलेगा, जॉब भी वहां पे अच्छी लगेगी इसकी निस्बत। तो इसका क्या हाल होगा कि नाम तो तब भी उसको अपने, अगर वो कॉमन शहर को अपने अपग्रेड भी करता है, तब भी जो एक पुराने नाम या एक मशहूर नाम जो दूसरे शहरों के साथ वो बसता है, वो अपने शहर के साथ नहीं होगा। तो ये नाम जो है ये ऐसे तो नहीं पड़ जाते हैं, कुछ हकीकत होगी कि जिसकी वजह से वो मशहूर होते हैं। यानी अगर लाहौर लाहौर है तो उसकी कोई हकीकत होगी ना, इतनी कहती है। इसलिए कि लाहौर में एक नायाब जो भी है, तो ये सवाल मैं कह रहा था कि लाहौर मास्टर प्लान बनाने के बाद ये एंड यही सवाल उठाया है कि वो क्या चीज है जिसके पीछे सारे जो है लाहौर में आते रहते हैं। यहाँ तो अब ओवर क्राउडेड हो गया। तो आंसर कि वो वाकई फैसिलिटीज बेहतर है यहाँ। तो यहाँ क्यों आते हैं कि वहां पे वो फैसिलिटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, वहां की फैसिलिटीज भी इसके मुकाबले बताए। सो दिस इज व्हाई द people of Lahore decided we don't want one master plan for Lahore. We want to develop the whole region ताकि लोग अपनी जगह पे सारी सहूलतें उन्हें मैसर। सर लेकिन जिसके साथ पुराने नाम वो बस्ता हो जाएंगे, यानी कि बीएनयू जितना मर्जी एक अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी डिग्री कर दे, लेकिन एनसीए वो कहेंगे एक पुराना नाम है, एक पुराना आर्ट्स वाला। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, बुनियाद तो कुछ हकीकत ही होती है ना जी मगर वो ऐड भी करती है जिंदगी के लुत्फ पर कि भाई फलाने जगह की मछली बड़ी अच्छी, फलाने जगह के पकौड़े बड़े अच्छे हैं, चौक वजीर खान में बड़ी अच्छी बुक बाइंडिंग होती है, मशहूर था सारी दुनिया में। सियालकोट का कागज इतना उम्दा है मिनिएचर के लिए, सारी दुनिया में जाता था, मॉस्को, यूरोप, सब। तो ये चीजें हो जाती हैं, तो उसकी वजह होती है कि वो वाकई अच्छी होती है। तो ये तो एक अलग बात है। तो नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें आप देखें कि इसमें कोई कमी है या सरप्लस, उसके मुताबिक क्या है। सर जो हम नॉर्मेटिव सिटी की बात कर रहे हैं तो किस तरह से फर्क होगा जो प्री इंडस्ट्रियल सिटी, ऑल प्री इंडस्ट्रियल सिटीज कैसे वो लिविंग स्टैंडर्ड जो चाहते हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो चाहते हैं डेवलप्ड सिटीज की, वो प्री इंडस्ट्रियल सिटी में कैसे मिल पाए, कैसे जो क्वालिटी जो डेवलप्ड सिटीज की हाँ। वो प्री इंडस्ट्रियल सिटीज में कैसे मिलेगी, या ये दोनों सिंथेसिस कैसे होता है, वो साइज और ये क्वालिटी, आज की क्वालिटी और पुराना साइज। आप उसकी फिक्र ना करें, जस्ट बी सेंसिबल। अभी हमने कहा कि नॉर्मेटिव सिटी के लिए पहली चीज तो ये कि कोई मैकेनिकल इंडस्ट्रियल मोड ना, तो मोटर निकल गई, लिफ्ट निकल गई, एयर कंडीशन खत्म हो गया, बिजली नहीं है, क्या करें। Again, deindustrialization, de-urbanization without decay possible. With industrialization it's not possible. अगर अभी तक आपको ये बात नहीं समझ आई
ये डिस्ट्रक्शन इज बिकॉज ऑफ द ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ओवर प्रोडक्शन क्यों होता है कि आप मैकेनिकली प्रोड्यूस करें। अगर आप एनुअल एनर्जी इस्तेमाल करें, नेचुरल रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, तो लिमिट है, एक हद से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन मशीन लगा दे तो स्विच ऑन कर दे, जब तक चलता रहेगा वो चलता। सो जब वो आप निकाल दें तो खुद ब खुद वॉल सिटी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे याद है जब इट वॉज अ मच सेफर एंड प्लेजेंट प्लेस, और हर लोग और तरह से मिलते थे। सो दैट इज व्हाई वी सेड लाहौर लाहौर। देयर वाज सम रीजन फॉर दैट, एंड बाय यस, बाय डेफिनेशन pre-industrial cities by and large are precisely what they were closer to the norm. Or any questions from the people online? Sir, I Hassan, Sadhu. जी, Hassan Zahir. Zada, sir. जी, बोले। सर मैंने पूछना था कि I've been thinking about जिस तरह आज आप आपसे बात कर रहे थे कि what makes a good like a city, मतलब जिस तरह walkable city है और other मतलब facilities आप provide करते हो उसमें, तो I've been thinking a lot about water bodies, like cities का काफी मतलब गहरा ताल्लुक रहा है water bodies के साथ, and like I am in Rawalpindi and I see a lot of like tankers, और वो जो water tankers होते हैं like एक एक सोसाइटी को मतलब वाटर प्रोवाइड करना। तो is this like a new development कि we don't have like one established water body that is accessible to everybody? Like I feel like with जितना cities expand हो रही है उतनी मतलब there's different societies and then each society wants like its own water body, and I'm not very sure कि like what is the history of cities and water bodies. लेकिन in the modern context, जिस तरह हम expand कर रहे हैं cities, तो उसमें transportation cost, water की transportation का, and मतलब facility obviously हर जगह पे वो एक water body नहीं होगी. You have to make roads, paved roads, ताकि वो the water from the tankers can reach the water bodies. So just wanted to ask, what do you think about this? Just facilities होती है और accessible walkable distances होती हैं cities में, like in a good sustainable city. So what should the मतलब accessibility to water be in a sustainable city? देखिए, पहली चीज तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की बात है. डू यू मीन वाटर बॉडी or do you mean water? I mean water, like supply of water, because okay, water is a need of the biological needs of the human animal. Water bodies may be a source of livelihood, etc., and may also meet the biological needs. But when we talk of water bodies, we normally mean a body of water for entertainment, sports, fishing, enjoying life, good to look at. It's beyond the needs. It's the sort of thing you desire. I would like to have my house by a lake. So that's what water bodies usually imply. Yeah, but we're not concerned with that. अगर है तो है, मगर it's not a necessity. What is necessary is water. अब वो पानी आपको from a water body हासिल हो, लेक है, बहुत से शहर हैं जो लेक्स पे या समंदर है या दरिया है. तो कोई लाहौर अक्सर शहर सबसे आप कह लें जहां ग़िज़ा खुराक उतना ही या शायद जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जरूरत हवा और पानी.
सो पानी का होना, अगर पानी नहीं है तो वहां जिंदगी नहीं हो सकती, चाहे जाए के ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो पानी का होना, मगर कितना पानी, सो फिर वो सवाल आता है कि व्हाट इज द नॉर्मेटिव नीड, फॉर हाउ मच वाटर डू यू नीड, डज अ पर्सन नीड। एंड अगेन, ये कोई पर्सनल लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है। देयर इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव यूज of, I forget exactly how much liters या gallons per person. इससे कम survival नहीं हो सकता. Anything more than that, up to a point, will be a comfort. अगर उससे भी ज्यादा हो तो शायद devastation और तबाही ना हो जाए, सब सैलाब आ जाता है, you have too much water. So वो फिर लिमिट से ज्यादा गुजर जाते हैं. So we do need water. How much water? As I said, ये तो normative defined है, and how much does the water that the body needs? Any doctor, biologist will tell you. अब लाहौर में जो जरूरत से अगर आप कंपेयर करें तो हम लाहौरी उस नीड से 3 गुना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हर शख्स, एवरेज की बात करें, बाज को उतना भी ना मिलता हो, मगर 3 एज ए ओवरऑल द पॉपुलेशन वी आर यूजिंग अबाउट 3 times the amount of water which is established as a minimal necessity. अब मैं बात कर रहा था कि एक तरफ आपकी लिमिट है कितना पानी आपको कम से कम चाहिए, दूसरी तरफ लिमिट है कि एनवायरनमेंट कितना प्रोड्यूस कर सकते। तो ये पानी हम लाहौरी कहां से हासिल करते? लाहौर का पानी पीने के लिए यहाँ के एक्विफर से हासिल होता, यानी जमीन के नीचे जो पानी है। जी सर। तो इसका पानी कहां से आता है? ये रिचार्ज होता है दरिया से, और ये पूरा एक बहुत बड़ा निजाम और सिस्टम होता है जिसमें पानी मूव करता है। मुख्तसर बात ये कि लाहौर का एक्विफर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी कंजम्पशन, सड़कें भी धोना है, लॉन्स भी करना है, गोल्फ कोर्स भी बनाना है, लेक सिटी की लेक भी बनाना है, और ये सारी फजूलियात में जो हम खर्च कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये सुनते आए थे कि 1 मीटर पर एनम एक्विफर इज गोइंग डाउन। अभी परसों तरसों में कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड करके आया, उसके अंदर वो बता रहे थे लाहौर का एक्विफर इज गोइंग डाउन 3 meters पर एनम, और इस रेट पे वो कह रहे हैं अब लिमिट को पहुंच रहा है, और वो डेट अगर इस रेट पे आप चलते गए तो पता नहीं 2040 तक या क्या वो सब कोलैप्स हो जाएगा। ऑलरेडी लोग मर रहे हैं फ्रॉम आर्सेनिक पॉइजन। दिस इज बिकॉज वी आर रीचिंग द लेवल्स के जहां पे आर्सेनिक आ जाता। सो यानी ये जो बातें हैं ये ऐसी बातें नहीं, दिस रियली अबाउट लाइफ एंड डेथ। और पानी इज essential, but you have to first see how much water do you need. और अगर उससे बढ़ गया तो इसका मतलब आबादी कम करें, कंजम्पशन कम करें, there are too many people and we have already reached that. और अपने हरकत चेंज करें, लेक सिटीज एंड गोल्फ कोर्सेज और ये सब चीजें ये खत्म करें, सड़कें धो रहे हैं सड़कों में, इट्स रिडिकुलस। सो दैट्स व्हाट आई मीन, नॉर्म से आप कंपेयर करें डिफिशिएंसी है या सरप्लस है, और उसको नॉर्म की तरफ वापस लेके आए। दैट इज द प्लानर्स टास्क, हाउ टू रिड्यूस इट, हाउ टू रिड्यूस द सरप्लस, हाउ टू मेक अप द डिफिशिएंसी, चाहे वो पानी हो,
चाहे गेहूं हो, जो चीजें जो जरूरियात के हिसाब से नॉर्म इज द मेजर, नॉर्म से कंपेयर करें। एक तरफ आपकी एनवायरनमेंट की कैपेसिटी, उससे ज्यादा पानी लाहौर का एक्वीफर नहीं प्रोड्यूस कर सकता, स्पेशली अब वहां से दरिया भी बंद हो गए तो वो रिप्लेनिश भी नहीं हो। और अगर हम इसी रेट से बढ़ाते चले गए, वी आर फिनिश। ठीक है जी, डज दैट आंसर योर Yes, क्वेश्चन? yes, sir. बिल्कुल सर, बस यही कि I've just been thinking कि water is such a basic necessity, लेकिन then there are some neighborhoods जिसमें water scarcity है, और some neighborhoods who have fountains and मतलब all sorts of like really big lawns जिसमें वो excess of abundance of water है. So just this like an imbalance of water in different neighborhoods, like I've just been thinking about that कि big cities में ये क्यों होता है, and also कि मतलब it just one feels a little helpless कि yes, we understand कि ये वजूहात है, we're over consuming in certain areas, but there seems to be no stop to it unless there's like a mass movement or something. So what do you say about that? एग्जैक्टली यही कुछ तो हो रहा है, और इसी को तो आपने करेक्ट करना है। और कौन करेगा? मैस ऑफ ह्यूमैनिटी, द मैस, द सिटीजन अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या वो लोग करेंगे जो इस चीज को खराब किए चले जा रहे हैं? क्या रूडा के स्पॉन्सर्स पानी की इनजस्टिस को वो सही करेंगे? जरा होश करें। यानी पानी की हालत ये है कि 3 मीटर पर एनम डाउन जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लाहौर जितना एक और शहर 10 मिलियन 11 मिलियन का, उस एक सोर्स जो एक पानी की है उसके ऊपर जाकर शहर आबाद कर, यानी हिमाकत के ऊपर हिमाकत। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज हाउ द प्लानर्स टास्क कि क्या करना चाहिए, दिस इज हाउ इट शुड बी डिसाइडेड, नॉट अकॉर्डिंग टू कि जी कार्स अब इतनी बढ़ रही है तो और मोटर और सड़कें बना दो, फ्लाईओवर बना दो। सो प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन मेजर्ड अगेंस्ट नॉर्म, और उसके अंदर एक शहर में है कि इस जगह की बिलो नॉर्म है, इस जगह की सरप्लस है। सो हाउ टू मेक दैट बैलेंस, दैट इज द जॉब ऑफ द अर्बनिस्ट। और वो ये हमने पिछली बार भी कहा था कि आप कितना ही अच्छा प्लान बना लें, लेकिन जब तक पावर एलिट्स नहीं, आप यू हैव टू डील विद दैट। वो एक सबसे बड़ी हकीकत है जो कि तबाह किए चले जाए। हाउ डू यू डील विद दैट? दैट बिकम्स इन द एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि आपको पता भी चल जाए कि कहाँ पे डिफिशिएंसी है, कहाँ सरप्लस है, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, लेकिन रास्ते में वो जो हाइल आ रही है वो पावर सिस्टम से, हाउ डू यू डील विद दैट? दैट्स द बिग क्वेश्चन। So maybe Sir, that I would have be also one more question. one more question. We've talked about how मतलब traditionally our vernacular architecture के जो elements थे and what was taken into consideration, like passive cooling, solar, sun की direction, all of that. So I'm just curious कि जो पुराने शहर थे, like even old Lahore and all the way back to Mohenjo-daro, right? What considerations, like urban planning considerations, did they take, and what was their what was their standard for what a good city is? Could you give any references to that? कोई sources that we could study? Yes, first of all, study the surviving pre-industrial cities from Mohenjo-daro and Harappa. उनके plan study करें, size study करें, populations का पता करें, and you will find that they conform to a normative city, normative limits. और जब वो exceed कर जाते हैं, so then Taxila shifts from this side to that side, additional work हो जाता है. So this is precisely what has been happening. But except for the modern age, in the last 200 years, we have lost sight, and we don't accept this. This is the new norm. वो कभी खत्म नहीं. So it's very clear. The data is here. If you want to study textual sources,
read the Shilpa Shastras, which are the building manuals of our culture, our history, जिसमें वो शुरू ही यहाँ से करते हैं कि सही orientation होना चाहिए. And then the first thing is to connect with the cosmic structures. आप वो देखें टेक्सला को और मोहनजोदाड़ो को और हड़प्पा को, तो आपको वो फिर नजर आएगा कि उसकी प्लान किस तरह से डिटरमिन होती है. और उसके बाद फिर राइट डाउन फ्रॉम द सिटी विलेज टू द पैलेस टू द टेम्पल, वो सब चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड हैं. सो दैट्स अ यूजफुल रेफरेंस टू लुक एट. इसके अलावा भी बहुत सारा लिटरेचर है where you can begin. सर वो रिपीट कर दीजिएगा, आपने क्या नाम बताया जिसमें आप कह रहे हैं एग्जांपल मिल जाएगी नॉर्मेटिव सिटी के? नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तो साइट्स हैं जी सर, और दूसरा लिटरेचर है. सर वो जिसमें आप कह रहे थे कि जो एक एग्जांपल सेट करते हैं जिसके पीछे वो कॉस्मोलॉजी वो करते हैं जो फॉलो हुई. मैं कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर की पैदावार शिल्पा शास्त्र 2000 साल पुराने, और वो हम देखते नहीं. हम कहते हैं हार्वर्ड जाके प्लानिंग सीख.